हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे। याद कर लेंगे बस 2 मिनट में। इससे बार आपका नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये वॉल्यूम्स याद करने हैं, ठीक है। लुक एट देम, दीज आर tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी है। सिंपल है, बहुत इजी है याद करना। 500 ml, देन इंक्रीज़ एकदम ज़्यादा होना है, ठीक है। 2500 to 3000, देन डिक्रीज़ एकदम ज़्यादा कर देना है 1000 to 1100, और देन उसी का कंटिन्यू कर देना है 1100 to 1200। क्योंकि एक दो बार आप लिखोगे इसको, यू विल जस्ट लर्न इट, और आप में से कईयों को तो याद भी होगा। इट्स सिंपल। आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर NCERT while you are watching this. Okay, now volumes are over. Now respiratory capacities. Okay, listen here. These are the respiratory capacities. First one is inspiratory capacity, ठीक है। Second is expiratory capacity, then functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity. So it is very simple to learn. Look that this TV plus first two, okay, these first two are added in the inspiratory capacity. Then expiratory capacity is TV plus ERV. Because it is expiratory capacity, we will add ERV. Inspiratory capacity, we will add IRV. Then functional residual capacity will be addition of last two volumes. One more thing, you have to learn these capacities in this order only. Otherwise, you will, just mess up. Okay. This one is over. Then vital capacity is addition of first three, okay. Then total lung capacity is addition of all of them 4. This is just the values and the formulas of volumes and the capacities. ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यूज से या फॉर्मूले से ही आते हैं, बट अगर डेफिनेशन आ गई तो वो भी आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस इज़ माय NCERT. ओके, you need to just learn small catch words. Look at here. TV, tidal volume is volume inspired or expired during normal. So you have to learn this normal respiration wala volume is tidal volume. Then inspiratory reserve volume, you have to learn additional volume of air. Additional forceful inspiration. Just remember these 3 words. Okay, definition. Then ERV is also this additional forceful expiration volume. Okay, now this one RV, residual volume. You have to just learn the volume of air remaining in the lungs even after forceful expiration. So it is a residual, it never comes out of the lungs. Okay, it always remains in the lungs. ठीक है, air remaining in the lungs. You can add your own language here, जो कभी बाहर नहीं आती है लंग से हवा या कुछ भी. Residual is, this word is itself explaining what it is. Then now here capacities. Inspiratory capacity is just volume of air one can inspire after normal expiration. So इसको imagine करना भी बहुत easy है. Okay, after normal expiration
वन थिंग वी कैन इंस्पायर अंडर, एक चीज़ हम तो टीवी अंदर ले सकते हैं बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल इंस्पिरेशन, और नॉर्मल रेस्पिरेशन कह सकते हैं हम उसको, तो वो तो हम उतना एयर तो हम अंदर लेंगे ही. देन सेकेंड पार्ट इज़ वी कैन ऑल्सो फोर्सफुली इंस्पायर. ओके, तो फोर्सफुली इंस्पायर क्या था, IRV था. So that's how this formula comes, and this is also the same definition. Total volume of air one can inspire after normal expiration. I hope you get it. Okay. Then same like this in EC, TV plus ERV. Same explanation just for the expiration. Okay. Now FRC, functional residual capacity, is volume of air that will remain in the lungs after normal expiration. Means what? We are expiring normally, the volume of air will remain. What will remain? Residual volume will always remain, and we are not forcefully expiring, so ERV will also be remaining in the lungs. That is called functional residual capacity. Next one is so vital capacity. What is written here? Maximum amount of air a person can breathe after normal expiration. Okay, forced expiration. Forced expiration के बाद क्या क्या हम अंदर ले सकते हैं? Just think logically. Okay, TV will always be there. Okay, force expire कर लिया तो forcefully inspire वाला भी आ जाएगा. ठीक है, IR will be there and ERV will be there. फोर्सफुली एक्सपायर जो किया है वो तो हम अंदर ले ही सकते हैं फोर्सफुली. ठीक है, तो ऑल दीज थ्री आई होप यू गेट. यू जस्ट नीड टू थिंक. फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया तो क्या क्या अंदर ले सकते हैं? लुक एट द वॉल्यूम डेफिनेशंस. देन टोटल एंड कैपेसिटी. टोटल कैपेसिटी इज by name itself, it's very clear. Total volume of air accommodated in the lungs. Okay, I don't think it is needed to be explained. My hi-fi English. Okay, now I hope this topic is clear. Just revise this 2 times and go through this as I told you to learn in this order only. You will never make a mistake.